Over the last few weeks, we have witnessed the insurmountable grief and rage of people across the country, from Kashmir to Kanyakumari and Rajkot to Silchar. People from all walks of life have taken to streets to demand the justice for the victim of the spine-chilling Kolkata rape and murder. Amid this furor, several other such cases have also made headlines, whether the sexual assault of 2 nursery students in Badlapur or the gang rape of 14-year-old girl in Nagaon, and the rape and murder of a nurse in Uttarakhand. Amid this outrage, we take a moment to examine how to make sure that such dastardly crimes can be prevented. NewsX has proposed a 6-point plan in this regard. Our proposal has been endorsed and lauded by several eminent people, including the West Bengal Governor C.V. Ananda Bose, IMA President R.V. Ashokan, Advocate Seema Kushawa, and Nirbhaya's lawyer and Valerian Santos, father of Keenan Santos. Meanwhile, the support has been also pouring on this campaign from all across the country. Psychologists, celebrities have hailed this campaign. Now let's listen. Yes, definitely. I mean, if there is the availability and if there is a provision to utilize any medical science interventions or any newer interventions or technologies to understand the brains or the mindsets of certain individuals, it should definitely be utilized and brought into use. मुझे लगता है कि न्यूज़एक्स ने जो कैंपेन किया है, इसको देश के कोने कोने में प्रचलित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर घर में एक महिला है, हर घर में एक पुरुष है, और ये महिला इन पुरुषों को बताएगी कि भाई हम सब समान हैं, तब जाके ये बलात्कार और मर्डर का सिलसिला बंद होगा। नहीं तो आज 2024 में 70-75 साल हो गए अपनी स्वतंत्रता को भारत की ब्रिटिश राज से। ये सिस्टम और ये सिचुएशन तो आनी ही नहीं चाहिए, इसमें कोई शक ही नहीं है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिला और पुरुष साथ में कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं कुछ दशकों से, और इसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। और इस तरह का कानून होना चाहिए कि इससे सख्ती से बरता जाए कि जो पुरुष इसका उल्लंघन करे, इसको इतनी सख्ती से बरता जाए कि आगे जाके एक मिसाल बने कि कोई पुरुष नज़र उठा के किसी महिला को अपने काम के क्षेत्र में बुरी नज़र से नहीं देखे। This initiative is really good because making people understand that psychology is the basis of disease. There are different kinds of diseases. We have got heart disease, liver disease, kidney disease, different diseases. But the brain controls everything. And inside the brain we have emotions. And in those emotions, the mind controls those emotions. तो अगर हम हर एक जो इंडिविजुअल है उसकी साइकोलॉजी को समझें और वो साइकोलॉजी के तरीके से उसको ट्रीट करें, इफ़ वी यूज़ psychology as a mode of treatment for patients, if there is counseling, if there is just somebody that they can talk to about their problems, they don't even need drugs, they don't even need medicines, because a lot of drugs and medicines have side effects. Why should we give people medicines and drugs as side effects if we can just talk to them as a psychology counseling session over 1 hour? सिर्फ बात करने से अगर इंसान का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो उसको दवाई देने की जरूरत नहीं, उसको जेल देने में डालने की जरूरत नहीं, उसको फांसी भी देने की जरूरत नहीं है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.